जय जगन्नाथ जय श्रीराम। तो ऑलरेडी पिला माने तमे लाइव रे जॉइन करथिलो। सो आमे दैट इज बायोलॉजी रो मोस्ट इंपोर्टेंट बा तमे जोटा कि थंबनेल देखिछ लास्ट टाइम रिवीजन पाई नियत रूपे आमे तुम हेल्प करिवु। तो चलो पायल संतिष्ठा जयश्री देखो क्वेश्चन स्टार्ट करियो। फर्स्ट क्वेश्चन तम पाकर अछि ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज काइमोट्रिप्सिन रेनिन एसिडिक पीएच। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्वेश्चन आंसर कोन हो आंसर दियो। पॉजिटिव माइंड रे रहो। ऑलरेडी तो मो सर बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहि कि गले कि एग्जाम पाई जमा भी डरियर नहीं। पॉजिटिव माइंड रे रहो जहां आप देखा जीव हला। चलो कोन आंसर ताले दैट इज ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिनोजेन टा एक्टिवेटेड हुए कहा द्वारा हमें जानि छे ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन इंपोर्टेंट कहा द्वारा बाय द एंटेरोकाइनेज। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हैला आंसर होची ए एंटेरोकाइनेज। अच्छा मते इटो वो ट्रिप्सिनोजेन जनरली ट्रिप्सिनोजेन टा कोठु रिलीज हुए एक्सोक्राइन ऑफ पैनक्रियास ऑप्शन दोची एक्सोक्राइन ऑफ पैनक्रियास ना एंडोक्राइन ऑफ पैनक्रियास ना लिवर from which structure the enzyme trypsinogen is secreted and what is the function of trypsinogen. Next question trypsinogen ta code secreted हुए exocrine of pancreas orgita perfect that is trypsinogen is an enzyme which is secreted from the exocrine of pancreas and generally trypsinogen is a inactive enzyme. Trypsinogen is get active to trypsin by the enterokinase. So answer होची enterokinase. हम जानि छे pancreas जहाँ को हमें heterocrine gland बोली कहा जाए that is it can act as both exocrine as well as endocrine. Exocrine part release करे trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase and nuclease. And trypsinogen टा generally active हुए trypsin को by enterokinase. Trypsin टा ultimately procarboxypeptidase को carboxypeptidase रे convert करे and that is yes चलो फैट बॉय गेमिंग बीएससी नर्सिंग पई कोर्स जाने को चाहूछो भी तमे नंबर रे कांटेक्ट करो हैला तळे जो स्क्रीन नंबर दी सिधरे कांटेक्ट करो से रिगार्डिंग रे तमो ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग विषय डिटेल्स दिया है। तो आंसर होचे एंटेरोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो व्हिच एंजाइम एक्टिवेट अदर एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस। बढ़िया क्वेश्चन। जनरली पैनक्रियाटिक रे जो एक्सोक्राइन पार्ट रहला से ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडेज अमाइलेज लाइपेज न्यूक्लियस रिलीज कला पर ट्रिप्सिनोजेन ता फास्ट कोन हबो ना फास्ट द एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन ता एक्टिव हबो ट्रिप्सिन को देन अल्टीमेटली ट्रिप्सिन टा अदर पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करिवो। ताल आंसर कोन हबो समस्त का आंसर सी आसुची दैट इज ट्रिप्सिन। व्हिच एंजाइम एक्टिवेट अदर एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। परफेक्ट। जनरली पैनक्रियाटिक जूस रो जो अदर एंजाइम गुडा को रहिले ताकू की एक्टिवेट करिवो दैट इज ट्रिप्सिन। परफेक्ट। आगो मन रखिवो ट्रिप्सिनोजेन ये आगो एक्टिवेट हे जिवो कहा द्वारा ना एंटेरोकाइनेज ई फॉर एंटेरोकाइनेज देन ट्रिप्सिन टा अल्टीमेटली आउ सब पैनक्रियाटिक एंजाइम को दैट इज कोन करिवो ना डाइजेस्ट करिवो। देन को एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय कोन हबो एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय प्रताप नंदू श्रिया जयदेव निवेदिता शारदा कोन आंसर को एंटेरो सार्थक एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय समस्त का आंसर आछि नीतीश संजुला सी। परफेक्ट। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिवो एंटेरोकाइनेज रो फंक्शन कोन। एंटेरोकाइनेज ता जनरली काहा को एक्टिवेट करिवो देन होची एंटेरोकाइनेज कोठु सिक्रेटेड हुए एंड स्ट्रिक्टली मन रखिवो एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय जनरली कोन स्मॉल इंटेस्टाइन। परफेक्ट। मते को कि जनरली वेयर इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज लोकेटेड हु कैन से वेयर इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज लोकेटेड। पाइलोरिक स्फिंक्टर कोठी लोकेटेड थाए वेयर इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज लोकेटेड आंसर दियो। पाइलोरिक स्फिंक्टर टा जनरली कोठी लोकेटेड थाए as you know that the part of stomach that is cardiac fundus and pyloric. So pyloric sphincter which is located between the stomach to the small intestine or we can say that pyloric part of the stomach to duodenum or the first part of the small intestine. Small stomach ro pyloric ru small intestine ro duodenum bhitere there is a sphincter called as pyloric sphincter. What is the function of pyloric sphincter? Who can say?
end of the stomach and the start of the duodenum. Pratap, perfect, you are absolutely right. The first, that is the end of the stomach and the initial part of the small intestine, that is duodenum bhitar hi pyloric sphincter thae. Then next mate kuha ki what is the important function of pyloric sphincter? Who can say pyloric sphincter important function kon ame jani che bolse बढ़िया अच्छी अंकिता प्रताप तारिणी शंकर पतित पावन नमस्कार पतित पावन सुशांत ओके टू बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड आम जानी जनरली स्फिंक्टर काम या टू बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द स्टोमक अच्छा मते कोई कि वेयर इज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज लोकेटेड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई टा जनरली कोठी लोकेटेड है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई टा जनरली कोठी लोकेटेड अछि हु कैन से आमे जानि जे जनरली डाइजेशन हम तले पढितले तीनटा स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई टा जनरली कोठी लोकेटेड अछि एग्जाम पई फॉर्म बी सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी नेबार अछि जम्मा भी नबार नाही एग्जाम कॉपी रे ओनली एंड ओनली तमरो एडमिट कार्ड एंड तमरो आईडी प्रूफ रे तम आधार कार्ड हो किबा तमरो कॉलेज रे आइडेंटिटी कार्ड हो तो एई सब नै के जिबार अछि देयर इज नो नीड टू टेक योर फॉर्म बी टू द एग्जामिनेशन हॉल ओके चलो सियोर करिबा नेहा जेनेटिक्स रो इवोल्यूशन रो काली करिबा करदबा जदी सो आंसर कोन होबो स्फिंक्टर ऑफ बॉडी कोड लोकेटेड अछि सपोज दिस इज द स्टोमक एंड एज यू नो दैट स्टोमक ऑफ देयर इज अ लिवर एंड जनरली लिवर जो डक्ट आसे बा लिवर रिलीज करे बाइल तो बाइल को जो डक्ट ता नै कि रसे दैट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट एंड बाइल ता जनरली स्टोर हुए कोठी ना गॉल ब्लैडर रे तो गॉल ब्लैडर जो डक्ट आसे दिस इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट and the bile duct combined with the cystic duct form the common bile duct and the common bile duct with the pancreatic duct open into the duodenum and sei jaga re generally hame koi pare hepatopancreatic duct and duodenum ei bhitere hi generally hepatopancreatic duct and duodenum ei junction bhitere sphincter of oda is located बढ़िया अछि then मते को कि insulin and glucagon which one is the hyperglycemic hormone among insulin and glucagon which one is the hyperglycemic hormone कोन आंसर hyperglycemic hormone कोटा insulin or glucagon pancreatic open to the together duodenum as common of hepatopancreatic perfect कोटा होची hyperglycemic hormone junction of hepatopancreatic duct and duodenum that is समस्त आंसर परफेक्ट अछि मते एबे को कि which one is the हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागन भितरु जनरली हाइपरग्लिसेमिक बा ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाउची किए तो राइट आंसर दैट इज ग्लूकागन समस्त आंसर परफेक्ट ग्लूकागन इज रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल और बीटा सेल जनरली पैनक्रियाज रो को सेल रु रिलीज हुए हमरो ग्लूकागन हु कैन से ग्लूकागन इज रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल और बीटा सेल कोन आंसर अल्फा सेल ना बीटा सेल को सेल रु जनरली the glucagon will release alpha cell right pancreas ro alpha cell generally release करे कोन glucagon and beta cell release करिवो insulin then मते को कि को अमेरिकन कंपनी थिला जो कंपनी के जनरली ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन करेरा फर्स्ट स्टेप नैथिला आगुर हमकु जतल ह्यूमन मानकर इंसुलिन दरकार पड़थला इट इज घुसुरी माने बा पिग मानकर pancreas रो आना होतला बट कोन हला ना मनीष मानन केस रे एलर्जी क्रिएट करतला सो दैट को कंपनी थिला जनरली जे कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन करे इली लिली परफेक्ट 1983 मसिया अमेरिका रो गोटे कंपनी दैट इज इली लिली नामक कंपनी जे कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन करे पे स्टेप नैतिला एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तम पई ह्यूमन मैच्योर इंसुलिन रे को पेप्टाइड चेन इज एब्सेंट बा को चेन इज एब्सेंट ए ना बी ना सी ह्यूमन मैच्योर इंसुलिन रे कोटा एब्सेंट ए एब्सेंट और बी एब्सेंट और सी एब्सेंट सी पेप्टाइड इज एब्सेंट लिपिका परफेक्ट C peptide is absent. Then मते को कि insulin रे which bond is present? Peptide bond and that is the glycosidic bond, the disulfide bond. Which bond present in the human insulin? Peptide C bond is absent. बढ़िया. कौन आंसर ताले? Perfect. That is disulfide bond is present in human insulin. Perfect. बढ़िया अछि. Next question जीवा ताले हमें generally मते को कि salivary amylase
act on केते pH रे salivary amylase टा generally act करे बा काम करे 6.8 7.8 1.8 कौन हो salivary amylase acts on और salivary amylase works on which pH 6.8 7.8 1.8 कौन हो 6.8 परफेक्ट 6.8 जनरली मते को कि पैरिटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो 3 टाइप रो सेल थाए तो जनरली पैरिटल सेल otherwise called as auxintic cell parietal cell or auxintic cell कौन रिलीज करिवो who can say parietal cell or auxintic cell will release dash and dash कौन हो parietal cell and auxintic cell perfect पासपोर्ट साइज फोटो एग्जाम हॉल को नहीं पारिबो ना देखो मेंशन कराइनी फोटो नवा पई जेहेतु सीबीटी मोड एग्जाम हो सो फोटो नवा पई कोनसी मेंशन कराइनी फिर भी नहीं कि जो चाहू सो नहीं कि जाई था पेरेंट्स को फेरी दो पेरेंटल सेल ऑक्जेनिक सेल रिलीज करिवो एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ओके एंड इंट्रिंसिक फैक्टर काम कोन हु कैन से पैरेटल सेल और ऑक्जेनिक सेल will release HCl and intrinsic factor then who can say what is the function of intrinsic factor on answer HCl and intrinsic factor perfect अछि for the Nitish perfect for the absorption of vitamin B12 मते को कि what is the other name of vitamin B12 and what is the disease caused by the deficiency due to the vitamin B12 B12 रो other name कोन बढ़िया अछि इंट्रिंसिक फैक्टर रा काम होची विटामिन B12 को ऑब्जर्व करिवारे हेल्प करे विटामिन B12 को देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B12 दैट इज सियानोकोबालामाइन परफेक्ट विटामिन B12 रो जदि ऑब्जर्व न होला बा विटामिन B12 रो डेफिशिएंसी होला तो जनरली कोन डिजीज होबो पर्निशियस एनीमिया बा डेंजरियस सीवियर एनीमिया होबो ओके परफेक्ट चलो ये रहिला तमरो कोन हमें पचारले देन नेक्स्ट जिबा बाइल जूस कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट बाइल रिलेटेड क्वेश्चन बाइल जूस कंटेन ऑल एक्सेप्ट आंसर दियो बाइल जूस कंटेन ऑल एक्सेप्ट कोन आंसर परफेक्ट दियो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बाइल सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड एंजाइम्स कोन बाइल जूस कंटेन ऑल एक्सेप्ट and this is the most unique question बढ़िया question strictly एनसीईआरटी रे मेंशन कराई छी bile do not produce any enzyme पूरा strictly पूरा लाइन मन रखियो generally bile do not produce any enzyme तो आंसर होची एंजाइम एई तरह मते जब क्वेश्चन पचरा फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन पचारे गोटे छोट पिलाटा मिल्क खाउची मिल्क रो कलर होची व्हाइट कलर बट जे जो झाड़ा जाउची बा तार स्टूल रो कलर टा येलोइश कलर व्हाइट जनरली स्टूल रो कलर येलोइश कलर कोन पई जोठी कि से येलो व्हाइट कलर मिल्क खाउची बट स्टूल रो कलर येलोइश ड्यू टू अमियो हाय कोन आंसर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट परफेक्ट जो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बा बाइल पिगमेंट प्रेजेंट थिबा कारणरू जनरली मिल्क व्हाइट खाइला सत्वे हम मानकर स्टूल रो कलर येलोइश एंड एटा भी क्वेश्चन पचारे जनरली गोटे लोकर स्टूल रो कलर येलोइश आसुनी व्हाइटिश आसुची ताले काहार माल न्यूट्रिशन हेतियो बा काहार डेफिशिएंसी हेतियो एंड स्ट्रिक्टली आंसर होची कोन ना लिवर रो रिलीज होता बाइल रो डेफिशिएंसी थिबो सो दैट झाड़ा रो कलर टा जनरली व्हाइट कलर आसी ओके चलो नेक्स्ट जीवा देखो मन रखियार अछि हमकु बाकी एग्जाम रे परफेक्टली मन रे दरकार सब अच्छा मते को कि जनरली बाइल सॉल्ट इज इंपोर्टेंट फॉर द इमास्कुलेशन ऑफ फैट ना इमास्कुलेशन ऑफ प्रोटीन हु कैन से बाइल सॉल्ट इज इंपोर्टेंट फॉर द इमास्कुलेशन ऑफ फैट और प्रोटीन कोन आंसर बाइल सॉल्ट इज इंपोर्टेंट फॉर द इमास्कुलेशन ऑफ फैट और प्रोटीन दैट इज फैट 144 वाचिंग तो हमें टारगेट करिया दैट इज हमें नियत रूपे टारगेट करिया मैक्सिमम पिला जॉइन होतो एंड दैट इज एग्जाम रो स्ट्रेस को माइंड रो काढतो सो आंसर कोन हो इमास्कुलेशन ऑफ फैट बढ़िया चलो एटा आ गोटे क्वेश्चन पचारे हबो जनरली फैट ता कोठी ऑब्जर्व हुए हमें जानि छे ऑल द डाइजेस्टेड फूड्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड इन द विली
Villi is the finger like projection which is present in the small intestine. और generally fat टा कोठी absorb हुए ऑप्शन दोची फैट टा generally direct blood vessel रे ना lacteals रे who can say generally fat टा कोठी absorb हुए directly in the blood vessel or lacteals who can say perfect that is lacteals that is a vessels from the lymph perfect मते को कि generally lymph or tissue fluid lymph or tissue fluid रे RBC more WBC more ना no RBC more WBC कौन हबो lymph बा tissue fluid रे RBC अधिका WBC अधिका ना RBC नाही WBC अधिका no RBC more WBC ना more RBC more WBC who can say lymph or tissue fluid रे generally कौन आंसर more WBC less RBC दीप्ति perfect चलो नेक्स्ट दिबा ओके देन which of the following is incorrect about the bile को नेकी incorrect कोडा it contains bilirubin and biliverdin which are the waste products bile salt is helpful for the emasculation of fats bile also activate the lipase bile contain digestive enzyme पचारछि कोटा incorrect हम ऑलरेडी गोटे लाइन पढिले कोन आंसर पढे अछि समस्त आंसर फॉल्स प्रिपरेशन चाडी छि तमरो किछि ओरी देवर नाही एग्जाम रे भलो आसीबो एंड क्वेश्चन टी स्पीड करिवो हे जो चलो आंसर कोन होछि एंजाइम परफेक्ट हम जानि छे बाइल डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम सो स्ट्रिक्टली हम मन रखिया रे बाइल रे कोनोसी एंजाइम नाही बा कहि पेरा लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम देन चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द बाइल को नै कि कोटा सेंटेंस ता इनकरेक्ट अछि इट कंटेन्स bilirubin and biliverdin which are waste product oh already eta hi answer chalo next iba intestinal juice or succus interosus is formed by the secretion of goblet cell broad border cells of lining of mucosa kon hobo that is the intestinal juice or succus interosus is formed by the secretion of goblet cell broad border cells lining mucosa both A and B none one of that is answer समस्त गण आसुची C okay C both A and B 8 पचारिया सोनालिका and कल्याण सोना these are the variety of wheat or rice semi dwarf variety of rice or semi dwarf variety of wheat कौन अब सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ राइस और सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट these are the semi dwarf variety of wheat perfect generally जो हमर काओ थिला रोजी 2.4 ग्राम पर लीटर दोतला जनरली जो प्रोटीन ने मिलुतला सेटा को प्रोटीन ह्यूमन अल्फा लैक्टाबुमिन ना ह्यूमन बीटा लैक्टाबुमिन ना ह्यूमन डेल्टा लैक्टाबुमिन कोन हबो अल्फा लैक्टाबुमिन ना बीटा लैक्टाबुमिन ना डेल्टा लैक्टाबुमिन कोन आंसर रोजी जो जनरली ट्रांसजेनिक काओ जार ना थिला रोजी तो ट्रांसजेनिक काओ रोजी रो जो 2.4 ग्राम पर लीटर जनरली जो मिल्क थिला तो प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क तो से मिल्क रे कोन थिला ह्यूमन अल्फा लैक्टाबुमिन देन मते को कि माइस्थेनिया ग्राविस व्हाट इज माइस्थेनिया ग्राविस हु कैन से माइस्थेनिया ग्राविस भितर को काली हम करथिले प्रीवियस क्लास रे माइस्थेनिया ग्राविस को नेकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करथिले माइस्थेनिया ग्राविस आंसर कोन हबो माइस्थेनिया ग्राविस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हबो पैरालिसिस ओके जनरली को डिजीज रे डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल डीजेनरेट हबो बा हमें कहि पेरा गोटे एज रिलेटेड डिजॉर्डर जो तरे की दैट इज बोन मास टा आस्ते आस्ते कमी जीवो एंड दैट इज फ्रैक्चर होबार चांसेस बढ़ी जीवो डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स बा एज रिलेटेड डिजॉर्डर कोन आंसर पैरालिसिस ओस्टियोपोरोसिस परफेक्ट समस्त का आंसर ओस्टियोपोरोसिस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एंजाइम लाइक डाइपेप्टिडेस
lipase, nucleosidase, nucleotidase, maltase, sucrase are present in bile juice, pancreatic juice, gastric juice and success interosus. कौन होगा आंसर? कौन होगा ताले? हमें जानी चाहिए जनरली इंटेस्टिनल जूस और सक्सेस इंटरसस रे कौन रिलीज हुए ये सब डाइपेप्टिडेज एगुडा तो सब सक्सेस इंटरसस हो चलो बढ़िया अछि। अच्छा मते को कि जनरली सुक्रोज सुक्रोज जेतले ब्रेकडाउन करिवो सुक्रोज ब्रेकडाउन कले कौन दबो ग्लूकोज ग्लूकोज ना ग्लूकोज galactose ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज who can say the disaccharide sucrose get broke down to produce glucose galactose glucose fructose कौन आंसर glucose and fructose सेमती glucose and glucose plus glucose कौन होबो that is maltose and glucose galactose is lactose. Next jiba Brunner's gland is situated in mucosal layer, is present in submucosal layer, helps in activation of gastric enzyme, secrete HCl. हमें जानी चाहिए maximum digestive glands are present in the innermost layer mucosa, but exception Brunner's gland. Strictly मन रखिबो exception gland Brunner's gland जोटा कि जनरली सबम्यूकोसा लेयर रे प्रेजेंट थाए बा डुओडेनम रो सबम्यूकोसा लेयर. आंसर कोन हबो? समस्त आंसर ठीक आछि. is present in submucosal layer. Perfect. All the digestive glands are present in बा हमें कहि परिया maximum digestive glands are located in mucosal layer but exception Brunner's gland टा सबम्यूकोसा है मन रखिबो मु लिखुची टिके स्पीडली तो बड मन रखिरा छु. देन चलो इनकरेक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोटीन पेप्टोन प्रोटीएज याको डाइजेस्टेड करै पय ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रोकार्बोपेटेज ठीक अछि ना भूल अछि जे कि डाइपेप्टाइड रे कन्वर्ट करिवो. आंसर कोन हबो? ट्रिप्सिनोजेन बा कन्वर्ट हुए ट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये सब जगह प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड प्रोटीन को पेप्टोन को प्रोटीएज को भांगी के डाइपेप्टाइड रे कन्वर्ट होछि. परफेक्ट. स्टार्च अमाइलेज ब्रेक डाउन करी के डाइसैकेराइड होछि. परफेक्ट. फैट को लाइपेज भांगी डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियस भांगी के न्यूक्लियोसाइड. तो कोन हो आंसर? सर सब ऑप्शन देखंतु डी न्यूक्लियोटाइड टा ब्रेक डाउन करी की न्यूक्लियोटाइड इज ब्रेक न्यूक्लियस न्यूक्लियोसिडेज प्रोटीन तो ठीक अछि दैट इज ट्रिप्सिनोजेन डाइपेप्टाइड अछि. स्टार्च ब्रेक डाउन करे अमाइलेज डाइसैकेराइड ठीक अछि. फैट इज लाइपेज ब्रेक डाउन दैट इज फैट बाय ट्राइग्लिसराइड को लाइपेज भांगे डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड और न्यूक्लियोटाइड को जनरली न्यूक्लियस भांगियो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटिडेज भांगियो न्यूक्लियोसाइड. तो दिस वन इज इनकरेक्ट डी. So next, find the false statement. Parasite that feeds on the external surface of the host organism are called as ectoparasite. The life cycle of endoparasite are more complex because of their extreme specialization. Parasitism evolved in so many taxonomy groups from plants to higher vertebrates. Endoparasite have greatly complex morphological and along with a higher reproductive potential. कौन हबो? आंसर दियो. बढ़िया क्वेश्चन. फॉल्स स्टेटमेंट पचार छला. पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट. परफेक्ट. हम जानि छे पैरासाइट एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट जोटा की बॉडी रो बाहर रुहे बा होस्ट सरफेस रो एक्सटर्नल सरफेस रे रुहे. एक्टोपैरासाइट रे एग्जांपल हो हम जानि छे. हु कैन से व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट? एक्टोपैरासाइट रे एग्जांपल हम जानि छे जेमति कि हम मुंड रे टिंको एंड मुंड रे उकुणी कुकुर मुंड रे टिंको लाइस. So these are the tick on the dog and lice on the human head. So these are the examples of ectoparasite. ठीक अछि. The life cycle of endoparasite is more complex because of their extreme specialization. Perfect.
parasitism evolved in so many taxonomic groups from plants to higher bodies. ठीक अछि, perfect. Endoparasites have a greatly complex morphological and anatomical features along with the higher reproductive potential. Now answer कौन होबो? That is C is answer. Parasite evolved so many taxonomies from plants to the higher vertebrates. So that is first statement होची C. हैला C. चलो. That is from plants to higher vertebrate. एटा केमथि हे परबो? Parasitism evolved in so many taxonomies. चलो next इबा examples of a brood parasitism. Brood parasitism example कौन होबो? Cuckoo and crow, parrot and pigeon, crow and parrot, quail and parrot. देखो तमर इकोलॉजी रो क्वेश्चन आंसर कौन होबो? बड़ा क्वेश्चन. ओके एडी जे हम जानि छे कुको एंड क्रो बा जो हमें काऊ बसारे कोइले अंडा दिए. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म. जेतो काऊ जनरली अंडा देथिबो कोइले आसी काऊ अंडा गड़ाई दबो एंड निज अंडा को सेठी देजिबो. ओके फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन ब्रूड पैरासिटिज्म ऑफ कोयल एंड क्रो. द एग्स ऑफ पैरासाइट बर्ड्स हैव इवॉल्वड इन रिजेबल्स ऑफ द होस्ट. पढ़ो ऑप्शंस पढ़ो कोन अछि. फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बड़ा क्वेश्चन आंसर दियो. इकोलॉजी रो क्वेश्चन समस्त का आंसर ए. ए अछि ना. A but monarch butterfly acquires the chemical by feeding on the poisonous weed and that chemical makes highly distressful to the birds. In both parasitic quail and the eggs of parasite birds have evolved in resemblance to host egg in size. Generally से जो काऊ बसारे अंडा टा दिए तो काऊ बोरो बसार अंडा सो यार साइज और कलर सेम थाए. Reduce the chance of host by detecting the foreign eggs and ejecting the further. ठीक अछि तो ब्रूड पैरासिट जेतले कोइली बस कोइला जेतले काऊ बसार अंडा दबो तो जनरली से जानि ही परिवनी. जानि परिवनी माने एटा ठीक अछि परफेक्ट. काहे ना से जानि परिवनी अंडा साइज सेम थिबो कलर सम थिबो सो फॉरेन अंडा कोटा निज अंडा कर जानि. मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्मिंग टू होस्ट ठीक अछि. मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्वड टू बी होस्ट. मेनी पैरासाइट जनरली हैव इवॉल्व करछथि टू बी होस्ट स्पेसिफिक इन सच वे दैट डू पैरासाइट रे को इवॉल्व. ठीक अछि. Monarch butterfly acquires chemical by feeding a poisonous weed. One minute. Parasitic weed in its adult stage, no, in its larval stage. So, what answer? That is D. D is incorrect. Next, which of the following shows commensalism? Commensalism example कौन? D. D. ठीक है perfect D. That is commensalism example कौन होबो? Cyanobacteria and clownfish lies on human. Lies on human तो parasite पड़ेबो. Lichen टा हम जानि छै mutualism रे जो algae and fungal association. Mycorrhiza भी that is हमरो mutualism रे जीवो. So Cyanobacteria and clownfish was generally जनकर positive and जनकर zero. Commensalism रे कोन होय? जनकर लाभ होतिबो जनकर किछि लाभ होनथिबो क्षति होन. जनकर प्रॉफिट होतो और जनकर neither loss neither gain. जेमति कि हम जानि छै that is grazing cow and cattle grade. जदल गाईटे चरी चरी जाउतिबो त बग जो खाउतिबो तो सेटा भी गोटे एग्जांपल ऑफ commensalism रो. Cyanobacteria and clownfish गोटे one of the most important example of commensalism. नीट रो प्रीवियस क्वेश्चन पचारछि. lies on human टा कोन होबो? who can say lies on human? ectoparasite ना mutualism ना amensalism ना commensalism. कोन आंसर? lies on humans. परफेक्ट आंसर दियो. लाइस ऑन ह्यूमंस टा कोन होबो? कान्हा इट्स ओके. चलो भूमिका, अक्सा, ओप, दिव्या, भूमिका, तृप्ति, आशुतोष, लिपिका. एक्टोपैरासाइट परफेक्ट. लाइस ऑन ह्यूमन दैट इज एक्टोपैरासाइट. Then that is the lichen, the association between the algae and the fungi. So this is an example of mutualism कहि परिया बा सिम्बायोटिक एसोसिएट करिक रहंती. अच्छा मते को के algae एंड जो फंगल algal एंड फंगल रो एसोसिएट होंती बा सिम्बायोटिकली समान एसोसिएट होती. आको भितरे फाइकोबैंड के माइकोबैंड के फाइकोबायंट के एंड माइकोबायंट के. हु कैन से
फाइकोबैंड किए माइकोबैंड किए आल्जीटा फाइकोबैंड ना फंजीटा फाइकोबैंड कौन हम आल्जी एंड फंगी एएफ दैट इज फंगीटा होची कौन माइकोबैंड फंगी इज माइकोबैंड एंड आल्जी इज फंगी इज माइकोबैंड गायत्री परफेक्ट फंजीटा होची माइकोबैंड रेडी तो लाइट चेन तो जनरली मते कोई कि लाइट चेन टा पॉल्यूटेड एरिया रे ग्रो करि परिबो ना करि परिबोनी लाइट चेन कैन ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया और कैन नॉट एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया कौन हम लाइट चेन टा जनरली पॉल्यूटेड एरिया रे बंची परिबो ग्रो करि परिबो ना ग्रो करि परिबो नाही आंसर दियो परफेक्ट नो लाइकेन कैन नॉट एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया देन माइकोराइजा को कहार कहार एसोसिएट को हमें माइकोराइजा बोली कहूचे कहार सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हमें माइकोराइजा बोली कहूचे कैन नॉट एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया बा जो एरिया रे हमें देखिबा मैक्सिमम पॉल्यूशन अछि तो हमें जानिबा कि से एरियाटा जो एरिया रे बहुत सारा लाइकेन अछि तो हमें स्ट्रिक्टली जानि परिया कि से एरियाटा बहुत क्लीन अछि तो आंसर कोन बारो नेवर ग्रो परफेक्ट अछि पॉल्यूटेड एरिया इट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया माइकोराइजा अछि कोन दैट इज द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स रूट्स ऑफ higher plants plus fungi so the association between the fungus and the roots of higher plants generally example होचे pinus तो roots of higher plants and fungus रा association को हमें कहूचे mycorrhiza ठीक अछि चलो नेक्स्ट जीवा commensalism नेक्स्ट क्वेश्चन देखो commensalism is shown by all except orchid or mango branch cattle egret and grazing cattle cinnamon and clownfish ना cuckoo and crow कौन आंसर pollution indicator right lichen is a good pollution indicator roots of higher plants and fungi मन रखिबो एनसीईआरटी एग्जांपल roots of higher plant pinus रो जो रूट ता फंगल एसोसिएट करे बोली एनसीईआरटी मेंशन कराई commensalism is shown by all except कोन हो orchid और mango branch cinnamon and clownfish cattle grazing that is एटा जो brood parasitism एग्जांपल तो आंसर है एटा ओके cattle grazing cattle हबो cuckoo and crow बढ़िया चलो नेक्स्ट lichen are mutualistic relationship between जनरली हम एबे क्वेश्चन करले lichen रो कहार mutualistic relationship अछि that is the relationship between the fungus and the photosynthetic algae so here is the answer perfect then मते को कि जनरली green algae रो मेजर क्लोरोफिल कोन green algae रो मेजर क्लोरोफिल कोन chlorophyll A or B na chlorophyll A or C na chlorophyll A or D which one is the major chlorophyll is present in the green algae कौन हो green algae रो जो major chlorophyll A and B perfect then मते को कि which fungi is called as sac fungi को fungi को हमें sac fungi बोली कहया which fungi is generally called as the sac fungi देखो जो माने तुम माने सब अच्छो 118 वाचिंग तृप्तिमयी सुशांत शिप्रा सोनालिका लिपिका जयंत स्वप्ना दीपक एचएमटी सुप्रभा शिप्रा नीतीश आशुतोष आस्कोमाइसिटिस सैक पंजे आस्कोमाइसिटिस विवेक रिंकू शाश्वती सुनो तो बेसिकली जोटा के हमें एबे अनाउंस भी करूथलो सार जतले लाइव रे थिले तो तम माने कर बहुत सारा क्वेश्चंस भी अछि दैट इज कैरियर रिलेटेड एंड 100% थरे तमे टाइम बाहर करो जदी पॉसिबल होची नियत रूपे आसो दैट इज जेमति हम जानि छे विद्यासागर क्लासेस तरफरु 7 तारिख बा शुक्रवार जो दिन तमरो ओयूटी एग्जाम तो 6 रे सरीबो 7 तारिख पडुची सो दैट तमे ट्राई कर आसिया पे बहुत सारा पिला भी दूर दूर अछन जाजपुर केंजर गंजाम सो नियत रूपे ट्राई कर आसिया पे एंड आसी पहुंच तो गोटे दिन टाइम आसो तमरो ऑनलाइन जो पिला माने अछथि तो ऑनलाइन पिला सो मीटअप हे जिवो एंड आल्सो से माने ऑफलाइन रो क्लासरूम ये सब भी देखि परिबो विवेक सर लोकेशन होची जनरली भुवनेश्वर रो नयापल्ली रो आईटी मार्केट इंद्रधनु मार्केट बा नयापल्ली तो नयापल्ली इंद्रधनु मार्केट रो रिची रेसिडेंसी बोली अछि ता फ्रंट रे एंड जदी भी तमरो किछि भी कंफ्यूजन होची जो तळे नंबर देछि से नंबर रे भी तमे कांटेक्ट करिवो कि सर मीटअप प्रोग्राम पई मते जिबार अछि लोकेशन दियंतु 100% लोकेशन देइ दिबे तो जो माने इंटरेस्टेड अच्छा आसिया पई सो नियत रूपे आसो पेरेंट्स मानको नै कि भी आसो सर ओयूटी रो बेस्ट कोर्स डिपेंड करे हरिहर तमरो कोन इंटरेस्टेड अछि तमे जदी एग्रीकल्चर बा फार्मिंग रिलेटेड बहुत सारा
काम करियर अछि बा आगु को जिबार अछि तो सो दैट तुम से लाइन जाई बिरो जदी तुम एनिमल मानक ऊपर लव अछि एनिमल मानक ऊपर प्यार मोहब्बत अछि सो एनिमल ऊपर तुम एनिमल हस्बेंडरी बा वेटनरी करि परिबो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन रूपे सर्जरी भी करि परिबो 12th मार्क मिसिबो एंड आल्सो तमरो पीसीबी रो 25% मिसिबो पूरा 12 पीसीबी रो ही 25% मिसिबो आइदर पीसीबी नहले पीसीएम रो 25% मिसिबो नॉट टोटल फॉर्म बी रे तुमको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मागियो नहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मागियो सो दैट केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रे ही 25% नॉट की टोटल 1 ईयर पई कोचिंग 100% प्रताप हमर एवरी ईयर रे 1 ईयर रु बहुत बढ़िया बढ़िया पिला परफॉर्म करछन एंड बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट भी होउची एंड 1 ईयर रे बोथ हमर नीट पई भी कोचिंग देउची एंड आल्सो ओयूटी पई भी कोचिंग देउची और सेटा भी पुनी इवनिंग बैच रे एंड बहुत परफेक्ट टाइम जदी जने पार्शियल ड्रॉप करि परिबो दैट इज ग्रेजुएशन करि करी भी जनरली ओयूटी पई भी पढी परिबो आराम से पढी परिबो तो 1 ईयर पई कोचिंग हमर दियाउची सर रिड्यूस सिलेबस हेइछ ना नाही देखो ओयूटी रो ऑफिशियल वेबसाइट रे जेहेतु कोनोसी नोटिफिकेशन हम पाखे नाही सो हम स्ट्रिक्टली या धरि के चलीबा तो नियत रूपे रिड्यूस्ड ओयूटी पई कोनोसी रिड्यूस सिलेबस नाही sir I am from western odisha I will come if I can yes you can come if it is possible rinku sir syllabus already rinku तुम आंसर देली सर CUET पई दिया होछ ना नाही yes CUET पई जनरली ऑनलाइन अवेलेबल ओके ये सौभाग्य भलो अछि एंड तुम माने सब भलो थाओ सो काली गोटे दिन पर तुमर एग्जाम नेक्स्ट 4 रे बहुत सारा पिलांकर एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े सौभाग्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें डायरेक्ट कहि परनी पूरा कॉपी एंड पेस्ट पड़े बट ओयूटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेकी हम एनालिसिस करि परिया दैट इज क्वेश्चन रो पैटर्न कोन एंड क्वेश्चन रो लेवल कोन सर नाइजर हां ऑनलाइन हेई परिबो कि ना यस प्रताप ऑनलाइन हेई परिबो ओके तो ये रहिला बट जो पिला माने इंटरेस्टेड अछ श्योर 100% आसो पेरेंट्स मान को धरि के आसो जहा जहा कंफ्यूजन अछि माइंड रे दूर करो हला आसियो माने बाध्य न हो कि तमे एडमिशन प्रपोज रे आसीबो तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन जानिबो एंड दैट इज फ्री लॉन्च भी अछि तमे माने आसी लॉन्च करि परिबो जेते तो बटर आसीबो तो आराम से आसो बोल से खाय पे करो पूरा मो सार मानक सो मीटअप करो एंड तम सांग मानक सो मीटअप करो देन आस्ते 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 दैट इज कोन तमरो अपॉर्चुनिटी हेई परिबो सो से रिगार्डिंग ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन कैरी करो सो बेटरमेंट होबो नियत रूपे तो ट्राई करो जो माने भी बॉस रे आसे चाहिबा आसी परिबो हम माने को रिसीव करि परिबो चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पाकर रहला माइक्रोराइजा को नेकरी नेक्स्ट क्वेश्चन चलो दैट इज स्यूडो पॉपुलेशन हेल्प्स इन पोलिनेशन इन स्यूडो पॉपुलेशन हेल्प्स इन पोलिनेशन इन फिग प्लांट ऑर्चिड प्लांट पुस्कुटा ना सनफ्लावर कोन आंसर मात्र 136 थैंक यू विवेक सर इंटीग्रेटेड बीडी पई कोचिंग दिया छी 100% श्रिया इंटीग्रेटेड बीडी पई हमर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग दिया छी एंड बहुत पिला भी पास आउट हेछन तमे को माने जदी के कांटेक्ट थिबे पचारि परिबो सो दैट बढ़िया रिजल्ट भी होची इंटीग्रेटेड बी रो और लोकेशन होची दैट इज हमर नयापल्ली भुवनेश्वर नयापल्ली इंद्रधनु मार्केट रिची रेसिडेंसी फ्रंट रे ऑनलाइन न जानि पले तळे नंबर रे कांटेक्ट करो तो आंसर कोन हो सीडो पॉपुलेशन रो एग्जांपल ऑर्चिड सौभाग्य ऑलरेडी कहले हला नयापल्ली आईडी मार्केट तो सीडो पॉपुलेशन हेल्प्स इन पोलिनेशन ऑफ ऑर्चिड बढ़िया नेक्स्ट जीवा द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ को-इवोल्यूशन व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ को-इवोल्यूशन अनुराधा 100% हबो काली करिया हला द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ को-इवोल्यूशन fig trees and the pollinated species of wasps na fungus and cyanobacteria ना the sea anemone and clown fish ना all of this कौन हो co-evolution आंसर दियो बढ़िया क्वेश्चन अछि ओके देखो को इवोल्यूशन पचार चला केबे बेले भाबी होनी कि सी एनोमेना एंड क्लोन फिश रे केबे बेले को इवोल्यूशन होनी जनकर तो पॉजिटिव होची एंड जनकर तो जीरो होची को इवोल्यूशन काडे फंगस सियानोबैक्टीरिया तो नुह तो आंसर होची फिग ट्रीज एंड पोलिनेटेड स्पीशीज ऑफ वास्प नेक्स्ट इबा द फ्रूट ऑफ अ फिग स्पीशीज प्रोवाइड जनरली फ्रूट ऑफ द फिग स्पीशीज तो फिग स्पीशीज रो फ्रूट जो रहला से कोन प्रोवाइड करे एग लाइंग साइड टू द फीमेल वास्प फॉर द ओविपोजिशन ना डेवलपिंग सीड एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा ना बोथ हैड बी एंड ऑलरेडी तुम आंसर जानि सारथिबो
फिग एंड वास्प रो जो कॉम्बिनेशन टा थाए जनरली वास्प जो कीटटा जनरली आसी कोन करे ना एग लाइंग साइड तो फीमेल वास्प बा जो फ्रूट रहिला बा फिग जो गछर फ्रूट रहिला तो फ्रूट रो लोक्यूल रे जनरली वास्प जो कीट रहिला सी आसी अंडा दिए एंड जनरली अंडा टा कोन करे ना ओविपोजिशन हुए एंड से जो डेवलपिंग सीड एज द फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प तो जो वास्प टा अंडा दबो से अंडा रे जर्मिनेट हबो से वास्प पई खाइबाटा होची कोन ना फिग रो डेवलपिंग सीड तो आंसर होची बोथ ए एंड बी फिग एंड वास्प इतर मन रखियो दैट इज वास्प टा होची गोटे पोको टाइप रो कीट भलिया एंड फिग टा होची ट्री तो यार फ्रूट्स रो लोक्यूल रे ये अंडा दिए एंड जेतोडा यार लोक्यूल अंडा दबो तो अंडा जर्मिनेट हे गला पर जो डेवलपिंग आसीबे तार वास्प रो जेतोडा प्रोडक्ट आसीबे सो से माने कोन करबे ना यार सीड को खाइ के बचते चलो नेक्स्ट दिबा 149 which of the following factors affect the rate of diffusion of gas generally कोटा rate of diffusion of gas को affected करे कोन आंसर OUAT रो किछि बुक अछि कि OUAT रो स्पेसिफिक बुक नै बट ऑनलाइन रे बहुत सारा बुक अवेलेबल चलो कोन हबो 5 तारिख रे क्लास हबो विवेक 6 तारिख पिला माना पई हबो हैला एंड नियत रूपे तुम ट्राई करो जो 4 तारिख जो पिला माने एग्जाम दबो से माने नियत रूपे 5 तारिख रे जॉइन करो तो से मानकर शेयर तुम शेयर करि परिबो फीलिंग शेयर करि परिबो सो दैट 6 तारिख रो पिला माने जेत बेनिफिटेड पाई परे कि को लेवल रो क्वेश्चन थिला जेतु सीबीटी बोर्ड रे क्वेश्चन होची इमीडिएटली पाई होबनी सो नियत रूपे तुम माने जॉइन करिवो 5 तारिख दिन 4 तारिख जो पिला एग्जाम दोछो 5 तारिख रे नियत जॉइन करिवो कोन आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें जानि छे जनरली जहां भी जहां में एयर इनटेक करछे व्हेन वी आर टेकिंग द लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन और लॉट्स ऑफ एयर टुवर्ड्स द लंग्स तो जनरली लंग्स रो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किए हमें जानि छे अल्वेली तो हमें जानि छे कि सदे अल्वेली को हमें जूम करिया अल्वेली एंड ब्लड वेसल भीतर जनरली गैस रो डिफ्यूजन हुए एंड डिफ्यूजन होवा पई कोन कोन फैक्टर रिस्पांसिबल दैट इज द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नियत रूप रे गोटे प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहिया दरकार नहले केमिति अल्वेली रू दैट इज गैस टासी के आरबीसी रो हीमोग्लोबिन पाखरे पहुंचबो बा आरबीसी रो हीमोग्लोबिन केमिति ए गैस को बाइंडिंग करिवो तो नियत रूपे गोटे प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नियत रो दरकार दे मस्ट हैव ए प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस गैस टा जेहेतु ब्लड वेसल को आसीबो बा डिफ्यूजन प्रोसेस रे गैस टा ब्लड रे डिफ्यूज होबो सो गैस रो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी रहा दरकार बा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड गैस टा सॉल्युबिलिटी होतबा दरकार थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन तो अल्वेली एंड ब्लड भीतर जनरली मेम्ब्रेन टा जत्ते पतला हबो गैस टा सेते जे ब्लड रे मिसी परिवो सो दैट 100% थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन टा गोटे निहाती गोटे फैक्टर सो हम स्ट्रिक्टली कहि परिया दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर हाईली रिस्पांसिबल फॉर द डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड थिकनेस ऑल द अबव तो आंसर होच कोन ऑल द अबव नेक्स्ट 60 क्वेश्चन चलो लॉन्ग अल्वेली ऑफ mammals have a thin wall composed of शुभस्मिता 1 ईयर कोचिंग हेले क्वेश्चन तुमको पूरा चैप्टर वाइज करा हबो गोटे गोटे पोर्शन को आगे सरा हबो दैट इज वेटनरी साइंस एंड वेटनरी एग्रीकल्चर वेटनरी एंड एग्रीकल्चर भीतर 100% वेटनरी ही कट ऑफ अधिक जाए सीयूटी थ्रू रे तुम देखि देबो टिके मोर पर्टिकुलर से दैट इज जो प्रोस्पेक्टस रछि एटा मने नहीं सीयूटी थ्रू रे केतेटा सीट बोली बट सीट तो अछि 100% what is the difference between BSc agriculture and OUT OUT is a university जहाँ अंडर रे सब कोर्स प्रोवाइड करा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम चलो कोन हबो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम नेक्स्ट इबा 61 क्वेश्चन तुम पाखरे the mode of respiration in rabbit ro mode of respiration कोन the mode of respiration in rabbit cutaneous mucosal tracheal ना pulmonary देखो जो माने जनरली हमें जानि छे ए गोटे इंफॉर्मेशन एटी मन रखो जो अर्थ मन रहले बा जिया गुडा को रहले एथम जनरली रेस्पिरेशन करे बाय देयर मॉइस्ट क्यूटिकल बा जदी कहबा ओदालिया चर्म द्वारा देन इंसेक्ट माने जो रहले network of tubes बा tracheal tubes हला नेटवर्क ट्यूब बा tracheal tubes तो जो माने जनरली
लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करती से पल्मोनारी रेस्पिरेशन। जो माने गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करती ब्रांकियल रेस्पिरेशन। तो रैबिट रो क्वेश्चन पचाला रैबिट का द्वारा पल्मोनारी ना ट्रैकियल ना क्यूटानेसियस कोन आंसर पल्मोनारी। ओके ओयूट रो क्वेश्चन मिक्स अप आसीबो दैट इज इजी टू मॉडरेट आसी पारे न नै मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन आसीबो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो निश्चय विवेक 100% सीयूटी पई स्टार्ट हबो एंड सीयूटी पई बढ़िया से स्टार्ट करबो काहे कि ना सीयूटी रो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी रो एंड आमे गोटे बढ़िया वगैरह गोटे सीयूटी पई स्टार्ट करे डोंट वरी हला। सर भवानीपाटना पई सेफ स्कोर बट भवानीपाटना नियत रूपे भुवनेश्वर तो कम जीवो बाकी सेफ स्कोर तुम सेतेबेले कहि हबो जदि तमरा हमें +2 एंड 10th जानि पेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जनरली केतेटा मेम्ब्रेन दे की डिफ्यूजन होउची आंसर दियो। तो कौन आंसर द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेजरली मेड अप ऑफ तीनटा लेयर कौन कौन तीनटा लेयर एटा होची alveoli एटा होची ब्लड वेसल। तो जनरली गोटे लेयर कौन आई थिंक समस्त आंसर आस्तिबो 1 इयर्स पई प्राइस केते रहइबो कान्हा प्राइस 1 इयर पई कम रहइबो बाकी प्राइस रिलेटेड जहां भी इंफॉर्मेशन प्लीज नंबर कांटेक्ट करो एंड 100% जदि चाहिबो तमरो प्राइस रिड्यूस होआ पई तो मते कांटेक्ट करो मु कहिबी तुम प्राइस रिड्यूस हो ठीक अछि। तो कौन हम ना स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ alveoli स्क्वामोस एपिथेलियम alveoli गोटे सार भाबी की किबा बड़ भाई भाबी की जहां भी भाबो जहां भी तमर हेल्प दरकार मते को मु तुम हेल्प करबी। स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ alveoli गोटे लेयर होची कोन alveoli रो लेयर आ गोटे होची एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल बा हमें कहबा ब्लड वेसल ए तीनटा लेयर देख होनी देखुन एटा alveoli आ एटा ब्लड वेसल तो गोटे दैट इज alveoli रो लेयर थिबो आ गोटे होची ब्लड वेसल रो लेयर थिबो आ ताका भीतर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिबो तो जनरली तीनटा लेयर देखि तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कोन हो तीन हो दैट इज द स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ alveoli एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। सो आंसर होची कोन 3 द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आंसर दियो 63 कोन हो। थैंक यू ओम। चलो कौन हम देखो स्ट्रिक्टली मन रखो एनसीईआरटी लाइनिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन हैला। तो मते को कि बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन रो बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर ना टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इज मोर हु कैन से द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर और टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इज मोर। आंसर समस्या कोन एटा तो 22 आंसर कोन हो हीमोग्लोबिन इज बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन रो बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर स्ट्रिक्टली मन रखर अछि हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिको कोन दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके चलो नेक्स्ट what is the value of partial pressure of oxygen in deoxygenated blood minus partial pressure of carbon dioxide in deoxygenated blood। बढ़िया क्वेश्चन partial pressure रो क्वेश्चन पचारिला सो दैट निहात रूपे तुमको एठी मन थिबा दरकार डाटा। सो alveoli रो छि partial pressure of oxygen होछि 104 mmHg partial pressure of carbon dioxide होछि 40 सेमती दैट इज oxygenated blood जदि हम देखिया सपोज एटा oxygenated blood and it has deoxygenated blood suppose it deoxygenated blood तो oxygenated blood रे मन रखिबो 95 40 बा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होची 95 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 सेमती डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होची पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज
45। तो क्वेश्चन पचारला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड ताले केते हो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रे केते 40 और 45 मन रखिबा 95 माइनस 40 तो -5 हैला स्ट्रिक्टली मन रखिबो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होची मन रखि दो हैला 95 40 आ डीऑक्सीनेटेड ब्लड रे एटी मन रखि दो एग्जाम पई दैट इज 40 और 45 हैला तो क्वेश्चन पचाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड रो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन माइनस पार्शियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट होची कोन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन माइनस पार्शियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 माइनस 45 माइनस 5 हैला ए दीटा डाटा मन रखि था अल्वेओली रे होची 104 40 बा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 कार्बन डाइऑक्साइड 40 ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे 95 40 डीऑक्सीनेटेड 40 45 ए मन रखो हैला सर 6 रे मोर एग्जाम 4:30 रु 6:30 अछि इवनिंग रे जल्दी करिवे क्लास प्लीज ओके द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जनरली जो रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन रहिला तो एमानकर टोटल थिकनेस केते कोन आंसर टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डॉक्यूमेंट्स तमे नै कि जीवो बापी जनरली तम डॉक्यूमेंट्स रे तम आधार कार्ड नै कि जीवो एंड तमरो आईडी प्रूफ नै कि जीवो जेमति कि आधार कार्ड ता तमरो होचे आईडी प्रूफ एंड आल्सो तमे नै कि जीवो तमरो एडमिट कार्ड तो एडमिट कार्ड रो दीटा प्रिंट नै कि जाइथिबो जति कोन दरकार हबो सो दीटा एडमिट कार्ड रो प्रिंट नै कि जाइथो एंड तमरो गोटे पेन नै कि जाइथो ऑलरेडी पेन रिगार्डिंग किछि भी नोटिफिकेशन नाही ओयूट रो ऑफिशियल वेबसाइट रे बट फिर जो हमरो इंस्ट्रक्शन आसे एडमिट कार्ड फिर भी नै कि जाइथो कारण मैक्सिमम जति कि ऑनलाइन एग्जाम हुए पेन से माने दियंतिनी सो जेहेतु तुम ऑनलाइन एग्जाम हो तुम रफ करिया पे से माने रफ पेपर देबे बट पेन न दे परंती सो नियत रूपे पेन टा नेगिरी जीवो एंड एडमिट कार्ड नियो आधार कार्ड नबो ओके दैट्स इट तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कोन हबो ओ क्वेश्चन एट देला तो टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन टोटल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन रो जो थिकनेस टा रहला कोन ना लेस देन ए मिलीमीटर कोड गला लेस देन ए FM meter much less than a millimeter so here less than a millimeter hla NCT lining millimeter not micrometer not nanometer चलो then diffusion membrane is made up of बढ़िया क्वेश्चन एटा पे हमें कॉले जनरली जो हमें जितबे हमें एयर इनटेक करछे तो अल्टीमेटली एटा कोठी आसीबो अल्वेओली को एंड अल्वेओली इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स तो अल्वेओली रो जो आसुची तो अल्वेओली एंड ब्लड वेसल भितरे जेतोळे गैस रो डिफ्यूजन हबो तो सेतोळे कोन कोन लेयर थिला हम कहितले दैट इज द स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ अल्वेओली एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम ताले कोन हबो स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ अल्वेओली एंडोथेलियम ऑफ alveolar blood vessel by capillaries and the basement membrane between the two layer all of this answer is D समस्त परफेक्ट D अछि बढ़िया दीप्ति वॉइस ऑफ कृष्णा सोनू टोटल सीट तो टोटल सीट तमर बा 700 केते बटे प्रोस्पेक्टस रे आई थिंक तार पर्टिकुलर देखि दबा जदी ओके चलो 750 ना एमती गोटे कोन मने नै ठीक से नेक्स्ट बा द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर एयर एंड अल्वेओली एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड कोन आंसर नियत रूपे क्वेश्चन पचारेबे ग्रीन कार्ड होल्डर पई अछि 5% आई थिंक ग्रीन कार्ड होल्डर माना पई भी अछि तो partial pressure of oxygen in atmosphere air alveoli and deoxygenated blood and tissue कोन हबो partial pressure in mmHg of oxygen atmosphere atmospheric air रे मन रखिबो atmosphere रे 159 partial pressure of oxygen 159 partial pressure of carbon dioxide is generally 0.3 and एटा होची atmosphere रे alveoli रे मन रखियो म ऑलरेडी तुम कहली alveoli रे कोन 104 और 40 फर्स्ट होची पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन सेकंड होची ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे कहली केते 95 40
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रे कहली केते 40 45। तो क्वेश्चन पचारला पार्शियल प्रेशर इन एमएमएच ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन रे एटमॉस्फेयर केते 159 एट अछि। देन अल्वेओल रे केते ऑक्सीजन 104, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केते 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड केते 95, टिश्यू रे 40। तो दिस इज द आंसर। हां एटा होला डाटा सेही क्वेश्चन हो ए बढ़िया समस्त कर ए अछि। आधार कार्ड रे बायोमेट्रिक हेइनी मोर वोटर आईडी प्रूफ अछि नेले चलिबो, यस वोटर आईडी प्रूफ नेक जाओ। सर इज इट हेल्पफुल फॉर द बीएससी नर्सिंग, यस 100% इट इज हेल्पफुल फॉर बीएससी नर्सिंग। देखो बीएससी नर्सिंग रे तुम एई क्वेश्चन ही पढिबो टोटली पर से एनसीईआरटी पैटर्न ही क्वेश्चन पढिबो। एम्स रे नर्सिंग हो बा तुम अलगा बीएससी नर्सिंग पे भी ट्राई करो, जो भी नर्सिंग हो क्वेश्चन ए ही रहइबो। जनरल गवर्नमेंट सीट सर 130 ओम जे तुमरो टिके भलो मार्क अछि 10th और प्लस 2 रे सो 130 रखले हबो किछ नै हला। म कहली पिलांकर 90% रखी कि रैंक आस्तियो 1200-1300, किंतु पिलांकर प्लस 2 रे 90 प्लस 2 रे 80% थाई कि 89% 90% थाई कि रैंक आस्तियो 1200, किंतु पिलांकर प्लस 2 रे 70% थाई कि रैंक आस्तियो 700। सो सबु ऊपर डिपेंड करे, सबुर डिपेंड करिवो होची जनरली तमरो ओयूटी रो मार्क एंड आल्सो 10th एंड प्लस 2 रो परसेंटेज। चलो नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर इन एमएमएचजी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एयर अल्वेओली। देखो सही क्वेश्चन पूरा गोटे थरा को घोसी की मन रख, पूरा पानी करी मन रख, डायरेक्ट मन रख, आखी मुजी के एटमॉस्फेयर रे मन रखि दो 159 0.3 हला। सबटा फास्ट होची पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन आ लेखुनी। अल्वेओली रे मन रखि दो 104 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे 95 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रे 40 45। ये तो कथा हो। एटमॉस्फेयर रे 159 0.3 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड। अल्वेओली रे मन रखि दो कोन दैट इज 104 आउ 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे 95 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रे 40 45 हबो। ओके एग्जाम डेट केम जानिबो? एग्जाम डेट तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड करनो कि राती पाइले एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करो निवेदिता। एग्जाम डेट जानो हला एडमिट कार्ड 1200 रैंक रहिले एग्रीकल्चर हेई परिबो। जदी 1200 रैंक थिबो एंड ता भीतर बहुत सारा पिला नीट रो भी थिबे, नीट काउंसलिंग फॉलो अप करी नीट पळेबे, एमिति पिला अछन नीट एग्जाम दउछन प्लस ओयूटी दउछन। तो सपोज 1200 रैंक तमरो अछि एंड सीट अछि टोटल 700 केते गोटे समथिंग, सो दैट तुम जदी से 1200 पिला भीतर नीट को बहुत सारा पिला एग्जाम देथियो एंड नीट काउंसिल फॉलो अप करी तले तारो को गवर्नमेंट एग्जाम होई जाउथियो बा नितार होई जाउथियो कि नाइजर होई जाउथियो कि सीयूटी होई जाउथियो, तो से माने से सो एग्जाम गले 1200 रैंक पिला गुडा को ऊपर जिवे। सो नियत रे चांसेस मिली पारे। सर मेटल इज अलाउड, 100% मेटल अलाउड नो, तो नियत रूपे तमे मेटल किछि भी कड़ा पड़ा गुडा पिंदी के जाओनी। सर गवर्नमेंट वेटनरी रे केतेटा सीट अछि? भुवनेश्वर रे 100 टा सीट। गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज बा जो ओयूटी रे हमर भुवनेश्वर ब्रांच रहला, तो भुवनेश्वर रे 100 टा सीट अछि। सर सीयूटी रे 400 आउट ऑफ 600 चांसेस अछि मिली जिवार, 400 आउट ऑफ 600। कास्ट वाइज बेनिफिटेड देबोजति 100% अछि, एससी एसटी पिला पाई रिजर्वेशन अछि। प्रोस्पेक्टस गोटे टोटली पर अछि ओयूटी रो, दैट इज को केते कोन तमरो सीट कोडी अछि को कॉलेज रो प्रोस्पेक्टस तुम डाउनलोड करि परिबो, नल ता रिगार्डिंग गोटे वीडियोस दि बनै देबो। ड्रेस कोड तमरो सिंपली हैला, सिंपली ड्रेस कोड पूरा सिंपली यूज करके जीवो, जमा जींस फिन्स एते पिंदी के जीवनी, नॉर्मल जींस पिंदी के जाओ। थैंक यू प्रत्युष। काली क्लास हो कि अनिल 100% हबो। सर आपण भले टीचर ओडिसा रे रहले आम एजुकेशन बहुत ऊपर को जीवो। थैंक यू थैंक यू। व्हाट इज द ड्रेस कोड? ड्रेस कोड देखो, ड्रेस कोड रिगार्डिंग पचार जो तो इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड रे क्लियरली मेंशन कराय ड्रेस कोड कोन, बट तुम भाबो आज जेतले हम गोटे एग्जाम दबा पय जाउछे सो नियत रे गोटे सिंपली ड्रेस पिंदी के जिया, शूज फ्यूज इते यूज करनी। बहुत सारा एग्जाम रे अच्छे सेंटर पडिथिबो तो से माने तुमको शूज कहबे खाली खाली पादरे जीवा पय, सो नियत रे तुम स्लीपर कोन पे न वेयर कर जियो, स्लीपर हो कि सिंपली सैंडल हो, गर्ल्स माने भी से यूज करी जाओ। काहे ना बहुत एग्जाम मु देखि छी, मु भी जो एग्जाम दबक जाए सो बेसिकली तुम शूज ये करी जिवे, शूज खोली के जिया पड़े, तो खाली गोटे जिया पड़िबो, सो दैट तुम स्लीपर पिंदी के जाओ। एडमिट कार्ड गोटे नेले चलिबो, 100% चलिबो, गोटे नियम मु खाली गोटे कहितली काले तमे नष्ट हो जाउची, चिरी फिरी जाउची गल्ला बेलकू, सो सेठी एग्जाम सेंटर पहुंचला टाइम हे जाउतिबो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परनो, तो सो दैट कहितली डीटा बाहर करि नवा पई।
हाँ जदि फिशरी होची एई इयर्स एग्रीकल्चर वेटनरी न होई कि फिशरी होची एंड तुम चाहो फिशरी एडमिशन करी नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन पे हाँ हेई परिबो बहुत पिला भी करूचंती आदित्य तुमरो 90% एंड 87 बढ़िया स्कोर अछि सो वेटनरी पे तो 130 प्लस आनो भलो स्कोर अछि 130 135 फॉर्मल इज फॉर्मल पिंदी गले बेटर फोटो फोटो तो मेंशन करायनी एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन रे बट जदि फोटो नै जाउ छोटो फोटो नै था ना फोटो दरकार पड़िबनी सीबीटी मोड जो एग्जाम होबनी कि तमरो सेठी आधार कार्ड सो तम मुहटा को चेक कर देबे चेक कर देला परे तुमको एग्जाम सेंटर ठेई बेसिकली तमरो कंप्यूटर स्क्रीन रे तम फोटो आसीबो ओबीसी कैटेगरी हाँ बेनिफिट अच्छी 100% मैम को कहिया काली करिया पे हला फॉरेस्ट्री में देखो आगो वेटनरी पिलांगर मैक्सिमम चॉइस थाए तेरे वेटनरी परे परे पिला मानकर एग्रीकल्चर भुवनेश्वर एग्रीकल्चर चिपिलिमा एग्रीकल्चर भवानीपाटना ता परे आस्ते आस्ते फॉरेस्ट्री के आसंती तो ये सब कौन सा चैप्टर है ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड दैट इज इकोलॉजी लाइक दिस एग्रीकल्चर पैकेज आसुतोष पैकेज माने को सेंस रे पैकेज पढिला पर जॉब रो पैकेज या खर्च केते हो एग्री तम ओयूटी रे जो पिला माने जनरली एग्रीकल्चर हो कि तो तुमको जनरली 51000 केते टंगार गोटे ड्राफ्ट नेक जीवा पड़िबो से रिगार्ड रे ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन मु तुम देई दी गोटे वीडियो करी केते टंकार ड्राफ्ट नेक जीवा पड़िबो तो कोन कोन डॉक्यूमेंट्स नेक जीवा पड़िबो आईडी प्रूफ जदी तुमर आधार कार्ड नाही आधार कार्ड रो छोटो बड़ फोटो अछि सो निहाती रूपे तुमको आधार कार्ड नबा सहित तुम स्कूल रो आइडेंटिटी कार्ड नियो काई ना वोटर आईडी कार्ड तुम हेई नथियो एज हेई नथियो सो छोटो बड़ फोटो अछि माने निहाती रूपे संजुला तुम ट्राई करो तुमर कॉलेज रो आईडी प्रूफ नै कि जिया पई आइडेंटिटी कार्ड सर बायोटेक्नोलॉजी करियो देखो काउंसलिंग रे तले हम बसिबो तुम माने तो सेतो बळे सब डिपेंड करियो केते पिला काउंसलिंग को आछंती तर 1500 रैंक बंद पिला डका आइची बड पिला आछंती 1000 रैंक से 1000 रैंक भितरे भी पिला थिबे जो मानकर से माने हेइथिबो रैंक किंतु से माने कोन करियो ना बेसिकली तो अलगा जगह रे हेइ जतो सीयूटी हेइ जतिबो कार नीट हेइ जतिबो तो से पिलांगर भी जनरली प्रॉब्लम हुई चलो क्वेश्चन करिया नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन और आरबीसी केते परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जनरली ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन और आरबीसी जदी 100% ऑक्सीजन हमें इनटेक करूचे तो केते परसेंट ऑक्सीजन जनरली हीमोग्लोबिन द्वारा ट्रांसपोर्ट होय हम जानिचे 97%. So option B is perfect 97%. Shivasis 93. Sir more 93 in both. 93 both माने तो 125 plus. तो answer जो next. Besides RBC, blood plasma also carries oxygen in dissolved state. The percentage हमें जानिचे directly inside the lining 100% रो एयर जदि हमें इनटेक करूचे सो 100% एयर जदि लंग्स को आछी तो से 100% रो जनरली 97% होची का द्वारा बाइंड करिवो हीमोग्लोबिन द्वारा बाइंड करिवो केते ना 97% देन केते परसेंट होची डिसॉल्व प्लाज्मा रे रहइबो 3% सो ऑप्शन कोन हबो डिसॉल्व प्लाज्मा पचारची बिसाइड आरबीसी ब्लड प्लाज्मा केते हो 3% हला देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Carbon dioxide is transported by RBC as bicarbonate in dissolved state through plasma. Now all of these. कौन होगा? टेंथ रे 80% प्लस 2 रे 58% प्लस 2 रे ठीक कमी जाइए वेटनरी साइंस हेई पर बहुत परसेंटेज रखिया पड़ियो 9482 भुवनेश्वर पाई केते मार्क 130 35 प्लस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो तमर बहुत सारा क्वेश्चन अछि हम बुझी पारुची आई होप कि भगवान दयारे तुम एग्जाम सब भलो हो एंड ए विषय रे कंप्लीट हम डिस्कशन करिवा चलो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एज बाइकार्बोनेट इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा ना ऑल ऑफ दिस कोन हो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एज बाइकार्बोनेट ना इन डिसॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा ना ऑल ऑफ दिस हम जानिचे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हेई परिबो ऑल ऑफ दिस काहे ना हम जानिचे टिश्यू जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करिवो 70% कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रिक्टली मन रखिबो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट फॉर्म रे ट्रांसफर हुए
and bicarbonate form हुए by the enzyme carbonic anhydrase important. Then also 20 to 25% होचे RBC द्वारा ट्रांसफर हुए important. Then and also dissolved plasma देकी भी generally 7% that is carry हुए. तो आंसर होची कौन होबो all of this. Perfect all of this. चलो next question जिबा. Pulmonary circulation is required for pulmonary circulation is required for कौन होबो. Pulmonary circulation is required for pulmonary circulation is required for nutrient supply to lungs, elimination of waste product from the lungs, oxygenation of oxygenate of deoxygenated blood ना nutrient supply. देखो दीटा टाइप रे सर्कुलेशन देखा जाए. गोटे होची pulmonary circulation and another one is systemic circulation. तो जनरली pulmonary circulation को मन रखे पे मु तुम गोटे ट्रिक कहितली कोन ना मन रखियो PURV माने कोन PU फॉर होची pulmonary, RV फॉर होची right ventricle, R फॉर होची right, V फॉर होची ventricle. तो एया कहे मन रखितली कोन ना राइट वेंट्रिकल राइट रोलटा लेफ्ट वेंट्रिकल रोलटा आट्रिया. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन टा राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आट्रिया पर्यंत जो पाथ रहला सेटा होची पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो सपोज यदि हम स्ट्रक्चर गोटे जनरली करिवा सपोज दिस इज द हार्ट एंड जनरली हार्ट रो सपोज एटा होची राइट आट्रिया एटा होची लेफ्ट आट्रिया एंड सपोज दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो बेसिकली कोन हुए ना जतो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ओटा का राइट आट्रिया का आसीबो तो राइट वेंट्रिकल को राइट आट्रिया राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाल्व. तो राइट वेंट्रिकल जीवो कोठी कि ना पल्मोनरी आर्टरी देकी कोठी जीवो ना लंग्स को जीवो. लंग्स रे ऑक्सीनेटेड हेगला परे अगेन पल्मोनरी वेन देकी रासियो लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल परे पुनी डोर्सल हाउटा देकी जनरली कोठी जीवो ना बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स को. सो जनरली पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरी कोड रहला राइट वेंट्रिकल रो. तो पाथ डाया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरी. तो दिस इज राइट वेंट्रिकल रो लेफ्ट आर्टरी. तो ता भीतर की जाउची पल्मोनरी आर्टरी जाउची एंड आल्सो पल्मोनरी वेन जाउची लंग्स भी जाउची. तो न्यूट्रिएंट सप्लाई टू लंग्स हबो ना एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लंग्स हबो ना ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ताले कोन आंसर ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड हे परियो 132 सी हे परियो. परफेक्ट समस्त का आंसर सी. बढ़िया हैला मन रखिबा ट्रिक मन रखिबो. पल्मोनरी सर्कुलेशन कोन ना PURV आ सिस्टमिक सर्कुलेशन होची उल्टा हो राइट वेंट्रिकल रे लेफ्ट आट्रिया and systemic circulation होची right left ventricle रू right atrium. चलो बढ़िया अछि. अनु तमरो 10th रे 90 and 12th रे 72 90 72 तो एवरेज 80% आसले बेले तो नियत रूपे 135 40 रखो सेफ. देखो डिपेंड करिवो OUT एथरे को भला पिला दउचंदी ड्रॉपर केते अछंदी केते परसेंटेज रो पिला दउचंदी सब डिपेंड करिवो एग्जाम सरला परे. 10th रे 80 12th रे 77 80 77 सेही 140 प्लस. चलो नेक्स्ट जीवा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन. मु समस्त कमेंट पढछि एंड सीरियसली आई एम सॉरी कि समस्त कमेंट को नेकी आंसर देई होनी. शाश्वती मु तम कमेंट पढछि मैम को क्लास रिलेटेड. तो फोटो जो कलर बैकग्राउंड अतुल्य 100% चलिबो जो कलर बैकग्राउंड हो. तो समस्त आंसर देई होनी. आई होप कि एई रिगार्डिंग गोटा आउतरे क्लास नियत रखिया दरकार कि तुम क्वेश्चन आंसर दी हबो. केते सारा क्वेश्चन सर मोर कोंतु सोनाली तुम सोनाली रो कमेंट टिके तळु को नेलो. सोनाली रो कोन मेसेज सोनाली कोन मेसेज आस्ला 86 एंड 12th रे 84 रखिले एग्रीकल्चर 86 84 बढ़िया सोर 6 से 10 8 8 16 17 170 तो 70 रेले केते 1 से 135 रखो सेफ स्कोर 135 37 प्लस रखो. चलो नेक्स्ट जीवा. Which of the following is true about the hypertension? Hypertension को नेकरी कोटा true. It leads to cardiac disease. Obviously hypertension आले cardiac disease हबो. It affect the vital organ like brain and kidney. Perfect. It repeats the check of the blood pressure of individuals that is 140/90 or high hypertension. Perfect. And all of the above. So answer is all of the above. बढ़िया अछि. All of the above हबो. डोरा तुम मेसेज. चलो कौन नेक्स्ट. फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग कौन हबो. बढ़िया क्वेश्चन. ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेशन रो क्वेश्चन. CAD स्ट्रोक वॉल्यूम एंजिना एंड हार्ट फेलियर कौन हबो. CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस हबो. हम जानि छे जो आर्टरीटा जनरली हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करे ताको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोली कहू. जो
दैट इज कोरोनरी आर्टरी बोली कहउचे जनरली कोरोनरी आर्टरी जदी कोनसी फैट कोलेस्ट्रॉल बा किसी जदी ओबेसिटी ए कॉज रो जदी आर्टरीटा जनरली ब्लॉक होउची सो निहत रूपे आर्टरीटा जो ब्लड टा सप्लाई करे हार्ट को से ब्लड सप्लाई टा ठीक से हेई परिवनी एंड हार्ट मसल को परफेक्टली ऑक्सीजन भी पहुंच परिवनी सो दैट निहत रूपे प्रेशर अराइज जिवो बा ब्लड प्रेशर अराइज हबो तो दिस इज को हम कहि पारे आर्थेरोस्क्लेरोसिस स्ट्रोक बोली हम जानछे ईच वेंट्रिकल्स पंप्स आउट 70 मिलीलीटर पर ईच कार्डियक साइकिल बीट वॉल्यूम हबो परफेक्ट इनकरेक्ट पछे एंजिना पेक्टोरिस हार्ट फेलियर इज हार्ट अटैक तो नो हार्ट फेलियर इज नॉट हार्ट अटैक आंसर कोन हबो दे जा तळकु ठीक है मेसेज उडा सो आंसर हार्ट फेलियर हार्ट अटैक कहीं ना हार्ट फेलियर टा हम जानि छे when heart is not pumping the blood effectively and heart attack होची generally the heart muscle is suddenly damaged or the cardiac muscle is suddenly damaged due to the inadequate blood supply it's okay हो हैरान नो बाकी एक्चुअली कोन होए कि जनरली जो माने परे रिकॉर्डेड हे गला परे जो वीडियो को देखंती तो मैक्सिमम पिलांग को डिस्टरबेंस आसे कि सर आपण पढोनांती अधिक कॉपी दोछंती तो ए रिगार्डिंग आसे बट जानिया भी हमर एटी तेरिस पिला जो माने जॉइन होछन तो नियत रे ताको स्किप करि होबनी काहे ना तम माने हम पई दैट इज ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल फॉर अस सो जेहेतु पिला कमेंट करछन तो नियत आंसर द 90% 12 रे 80% आईसीएससी एंड आईसीएसआर बीएससी एग्रीकल्चर केते 90 80 बढ़िया से 135 हे रिगार्डिंग रो वीडियो करिया पड़ी आज नियत केते परसेंटेज रहिलो भलो 100% आज पढिबो श्योर तुमको विद्यासागर क्लासेस रे YouTube चैनल रे 100% ए रिगार्डिंग रो वीडियो आसुची काली 10टा 11टा भीतर आसीबो जो मानकर वीडियो रे मु क्लियरली मेंशन कर देबी कि केमती कैलकुलेशन अछि एंड सेही कैलकुलेशन अनुसार तमे निजे निजरो सेफ स्कोर कोटा रहिछि तो कैलकुलेट करि परिबो डोंट वरी टिके वेट कर जा मु तो समस्त आंसर देबी चलो वीडियो अपलोड हे जिवो केमिति तम दैट इज सेफ स्कोर बाहर करिवो 10th रे एतिक रहले प्लस 2 रे एतिक रहले केमति हो सब मु इंफॉर्मेशन वीडियो रे कहि देबी हैला से अनुसार तमे तमर निजरो कैलकुलेट करि परिबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 135 कॉलम 1 कॉलम 2 हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक कौन आंसर हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक तो हमें जानी से हार्ट अटैक कौन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज वेयर इज द ऑप्शन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू inadequate blood supply 1 and cardiac arrest that is as you know that cardiac arrest when the heart is stop beating where is the stop beating and generally heart failure when the heart is not pumping the blood effectively enough to meet the needs of the body coronary artery disease chest pain in the heart muscle kon hobo B5 heart attack heart muscle cardiac arrest होची heart stop beating C1 B5 C1 I think A चलो coronary artery disease atherosclerosis and angina pectoris chest pain तो एटा A समस्त आंसर A ऑप्शन देखा जाउनी 1 मिनिट देखो ऑप्शन एबे आई थिंक ऑप्शन देखा होतिबो ओके देखो ओके कौन हला ना ए नेक्स्ट 136 it is often referred to as atherosclerosis it affect the blood vessel that supply oxygen to the heart muscle it caused by the deposition of a calcium fat cholesterol and fibrous lumen of the artery narrow कौन होबो जनरली मु तुमको ऑलरेडी कहली हार्ट मसल को जो आर्टरी टा जनरली ब्लड सप्लाई करे तो जेते बेले आर्टरी रे जनरली कौन होबो सपोज आर्टरी रे कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल ये सब जमाट हो जिवो तो ये जो आर्टरी रहला हमें ऑलरेडी जानि छे आर्टरी रो लुमेन टा कौन लुमेन रो डायमीटर टा छोटो आ थिकनेस टा अधिका एंड भेन रो लुमेन रो डायमीटर अधिका थिकनेस कम सो जेहेतु आर्टरी रो लुमेन रो डायमीटर टा कम तो मैक्सिमम प्रेशर टा एक जगह आस्तिबो जेतु गोटे छोटो पाइप रे तो डायमीटर टा कम हबो तो पानी टा कोन हेवी प्रेशर आस्तिबो सो प्रेशर को कमे पई वाल रो थिकनेस टा अधिका एंड जदी आर्टरी रे जनरली ब्लॉक हो जिवो तो 100% कोन हो प्रेशर बढ़िबो एंड प्रेशर बढ़िले हम जा कहूचे कोरोनरी आर्टरी डिजीज
सेति पई कुआ जाय कि जदी कोन से घरे जदी भी जदी एक्यूट चेस्ट पेन आस्ते आस्ते स्टार्ट हला आर्टरी कोन से कॉज रु ब्लॉक होबा स्टार्ट हला तो घरे भी अदा रस छेची की जनरली अदा को छेची की तार रस दे देबा पई कि ना अदा रस रे नाइट्रिक ऑक्साइड थाए आ नाइट्रिक ऑक्साइड ता जनरली गोटे भासो डायलेटर भलिया काम करे बा आर्टरी टाको ब्लॉकेज रु ये करे शुभश्री आंसर 84 एंड 71 84 10th एंड 71 4 8 5 8 7 15 तो जनरली 77 अप्रोक्सीमेटली तो 140 टू 145 प्लस रखो चलो आकाश 82 84 82 84 सो 135 रखो चलो नेक्स्ट PQRST आकाश देनी अच्छा मुझे 8 क्वेश्चन को P टा का को डिनोट करे आंसर कोन हो P का को डिनोट करे QRS का को डिनोट करे T का को डिनोट करे P QRS T कोन हो P डिनोट करे जनरली आर्टेरियल कंट्रैक्शन ऊपर आर्टेरियल कंट्रैक्शन स्ट्रिक्टली मन रखिबो नीट रो प्रीवियस रो क्वेश्चन पचारछि P डिनोट द आर्टेरियल कंट्रैक्शन QRS होची वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन न थाई कि सिस्टोल ऑफ आर्टेरिया थाई पारे सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल थाई पारे हला सिस्टोल ऑफ आर्टेरिया माने बुझिबो से POF QRS टा होची जनरली सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल बा कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल T टा होची देखिबा डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल बा हम कहि परा रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल हबो हला PQRST बडे ओके चलो नेक्स्ट बंडल ऑफ इज फाउंड इन राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया बोथ ए एंड बी ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कोन हबो तो पिले माने वर्तमान भाई एई लाइव रो एंड हो इमीडिएटली तुम माने जॉइन करिवो सेकंड लाइव स्टार्ट हबो सेकंड लाइव केतरा रे तमरो ठीक 9 टा स्टार्ट हबो से विद्यासागर क्लासेस रो लाइव सेशन जीवो तो सेथिरे जनरली जो टीजीटी पई होची तो टीजीटी क्वेश्चन प्राय सब सेम क्वेश्चन तो तमरो निहाती से क्वेश्चन ओयूटी पई इंपोर्टेंट तो निहाती तमे जॉइन करिवो ठीक 9 टा स्टार्ट हबो हला बंडल ऑफ इज फाउंड इन राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया ना बोथ ए एंड बी ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बंडल ऑफ इज प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कोन आंसर डी समस्ती कर आंसर होची इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आज हम जानि छे दैट इज हार्ट रो होची आर्टेरिया टा होची 1/3 पार्ट एंड वेंट्रिकल टा होची 2/3 पार्ट एंड जनरली आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल भितरे कहार को चैम्बर रो वॉल्यूम टा अधिका दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज लार्जर देन आर्टेरिया को सेपरेट करची इंटर आर्टेरियल सेप्टम वेंट्रिकल को सेपरेट करची इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम and हमें जाने छे जनरली बंडल ऑफ हीज प्रेजेंट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सो डी an atrioventricular valve atrioventricular septum कोटा इटा जोटा कि both side atrioventricle separate कोची this one is the interatrial septum एटा होची interatrial septum एटा होची interventricular septum and एटा होची atrioventricular septum फाइट हे गला atrioventricular septum तो क्वेश्चन पचाला atrioventricular valve present the backward of atrioventricular valve prevent the atrioventricular valve prevent the backflow or leakage of blood from the right ventricle into the right atria na left atria into the left ventricle na out into left ventricle कोन आंसर जूम करबा ओके ओके 79 रा आंसर दियो atrioventricular valve तो atrioventricular valve रो काम कोन जे कि बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करियो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इन द राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउट टू द आंसर इज ए 79 ए हला atrioventricular valve पचार छै हला atrioventricular valve कोन एटा होछ atrioventricular septum रे जनरली ट्राइकस्पिड valve अछि राइट एट्रिया रु राइट वेंट्रिकल भितरे लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल भितरे बाइकस्पिड valve तो जो बाइकस्पिड valve और ट्राइकस्पिड valve कहा ऊपर अछि atrioventricular septum ऊपर अछि सो atrioventricular valve बोली हमें कहउचे तो atrioventricular valve ता कोन करे ना जेतले वेंट्रिकल को ब्लड पळे आसीबो सो राइट वेंट्रिकल रु अगेन काले राइट एट्रिया को दैट इज ब्लड ता पुश अप हे जिवो
जेतेबेले वेंट्रिकल मसल कंट्रैक्ट हो तो ताको प्रिवेंट करे सेमती लेफ्ट वेंट्रिकल सो आंसर होची 79A। चलो हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन हार्ट इन ए पर मिनिट। ह्यूमन हार्ट पर मिनिट रे केतेटा डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हुए कोन आंसर हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन इज आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन हार्ट इन ए मिनिट। गोटे मिनिट रे केते थरो डबल सर्कुलेशन पर हुए हम जानि छे ईच मिनिट रे 72 टाइम्स हार्ट बीट करे सो आंसर होची केते ओके ठीक अछि बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल मेन ओटा नॉर्मल मेन रो नॉर्मल कार्डियक साइकिल रो टाइम केते ड्यूरेशन केते आंसर दियो जहाँ एते पेशेंस होकर सुनछ हैला ए लाइव पर संगे संगे 8:57 हला तो इमीडिएटली हमर नेक्स्ट स्टार्ट हो सो जितरे सब जॉइन करियो मु देखिबी तम ना गुडा को दैट इज सौम्य दीप्ति नितेश पायल सोनाली लुभा सार्थक सर मोर पीसीएमए एंड मु वेटनरी नै परबी कि वेटनरी पई जनरली पीसीबी दरकार सौम्य पीसीबी हैला इंस्ट्रक्शन अछि दैट इज सर मोर पीसीएम वेटनरी सौम्य दैट इज फॉर योर veterinary admission that is requirement of a PCB। The duration of cardiac cycle in normal men रो cardiac cycle रो duration केते हम जानि छी that is 0.8 second and 0.8 second भी डिवाइड कराई छी 0.4 second joint diastole 0.1 second atrial systole 0.3 second ventricular systole। चला during the systole of heart only atria contract only ventricle contract atria ventricle contract separate atria simultaneously during the systole of heart जेतोले systole होबा heart होबा during the systole of heart कौन से लेखिनी कि systole of atria कि systole of ventricle during the systole of heart atria ventricle कोन आंसर एससीएसटी पई सिद्धांत तमर मार्क ऊपर डिपेंड करो केते मार्क अछि कहि दिलम कहि दी कोन आंसर atria and ventricle contracts during the systole of heart atria and ventricle separate that is chalo next during the diastole of the blood enter the heart leaves the ventricle enter during the diastole blood enter to the heart leaves to the ventricle na leaves the heart na enters into the lungs during the diastole कोन आंसर एउट तम पई होमवर्क रहला 83 रु जेतु टाइम ऑलरेडी हे गलानी सो दैट एटा तम पई होमवर्क रहला एंड एटा भी तम पई होमवर्क रहला इजी क्वेश्चन डायग्राम रो क्वेश्चन आसीबो टू रीच द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट रो लेफ्ट साइड को आसला बडे तुम कोन देके आसे पड़िबो इस 85 86 87 एंड ये होला तम पई होमवर्क तो 83 रु 87 ये होची तम पई होमवर्क तो नियत रूप तुम होमवर्क करो मु तुम होमवर्क भी देखु छी पिलांकर बहुत सारा पिला दैट इज रेगुलर बेसिस रे होमवर्क रे आंसर दउछंदी एंड नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबा चलो हला एबे संगे संगे लाइव आसु छी 8:59 हला 1 मिनिट रे जो टीजीटी रो लाइव सेशन अछि सेथरे देखा हबा चलो दिनेश गुड नाइट नाही तमरो अगेन लाइव सेशन अछि आसो 9 टा रे आसो आ गोटे मिनिट रेस्ट नियो पानी पानी पियो एंड आसो चलो।